हेलो स्टूडेंट्स। सो आगे के लेक्चर में हमने 8085 माइक्रो प्रोसेसर का इंट्रोडक्शन, उसके प्रोग्रामिंग मॉडल एंड उसका बस ऑर्गेनाइजेशन देखा हमने। सो आज हम देखेंगे अबाउट 8085 माइक्रो प्रोसेसर पिन डायग्राम। सो 8085 माइक्रो प्रोसेसर एक इंटीग्रेटेड सर्किट है जिसमें 40 पिन्स है एंड इट हैज 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। मीन्स माइक्रो प्रोसेसर में 8 बिट डेटा बस है जो इंडिकेट करता है कि माइक्रो प्रोसेसर कैपेबल है 8 बिट तक का डेटा हैंडल करने के लिए। सो 8085 कैन मूव 8 बिट्स डेटा 8 bits of data in bidirectional system. So here we can see pin diagram of 8085 microprocessor. So it is 8-bit general purpose microprocessor and it's having 40 pins and it's require 5 single power supply. It requires 5 volt single power supply. Right? So it is capable of addressing 64K of memory. So here signals are classified into 6 groups. A8 to 815 pins are allocated as an address bus, multiplexed and address data bus, AD0 to AD7. These are the control and status signals. These are power supply and frequency signals. These are externally initiated signals. And this is serial input ports. So now let's see about the address bus signals. So 16 signal lines are used as an address bus. एड्रेस बस मेमोरी में लोकेशन डिफाइन करता है प्रोसेसर को डेटा रीड और डेटा राइट करने के लिए इसको कौन से लोकेशन पे डेटा मिलेगा, राइट। सो एड्रेस बस इज ग्रुप ऑफ 16 लाइन्स A0 to A15। तो ये 16 लाइन्स स्प्लिट हो जाती है दो सेगमेंट्स में, A15 to A8 एंड AD7 to AD0, राइट। सो A15 to A8 are unidirectional and used to carry high order address of 16-bit address. ये आउटपुट एंड ट्राई स्टेट सिग्नल्स हैं। मीन्स ये आउटपुट के ट्राई स्टेट सिग्नल्स मीन्स आउटपुट के 3 इलेक्ट्रिकल स्टेट्स 1, 0 एंड हाई जेड। हाई जेड को ओपन सिग्नल भी कहते हैं। सो ये हाई जेड स्टेट है, ये हाई इम्पीडेंस स्टेट है जहाँ आउटपुट डिस्कनेक्ट हो जाता है एंड सिग्नल को ओपन कर देता है, ओपन छोड़ देता है दूसरी डिवाइसेस को चलाने के लिए। सो ये A8 to 85 आउटपुट ट्राई-स्टेट सिग्नल्स है, ये यूज होते हैं एज अ हायर ऑर्डर 8 बिट्स 16 बिट के एड्रेस के लिए। एंड ये एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल होती है, मींस एड्रेस 8085 देता है मेमोरी और इनपुट आउटपुट लोकेशन के लिए। मींस डेटा माइक्रोप्रोसेसर टू मेमोरी या मेमोरी फ्लो होता है या फिर माइक्रोप्रोसेसर टू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को फ्लो होता है। सो ये सिग्नल्स यूज होते हैं मेमोरी लोकेशंस या फिर पेरिफेरल डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, राइट। एंड ये AD7 to AD0 सिग्नल्स आर यूज्ड फॉर ड्यूअल पर्पस। सो these signals lines here AD7 to AD0 are bidirectional and serve data for dual purpose. So ये input output tri-state signal है जिसमें दो सेट है सिग्नल्स के, एड्रेस एंड डेटा। सो जो लोअर 8 बिट्स है 16 बिट एड्रेस की ये मल्टीप्लेक्स्ड है, राइट। मीन्स ये पिन्स ड्यूअल टास्क, दो टास्क परफॉर्म करती है। सो एड्रेस बस इज यूज्ड टू कनेक्ट विथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ऑफ मेमोरी। सो मल्टीप्लेक्सिंग क्या है? मल्टीप्लेक्सिंग एक मेथड है जिसमें एक से ज्यादा सिग्नल्स कंबाइन होके एक सिग्नल बनाते हैं, बहुत सारे सिग्नल कंबाइन होके एक सिग्नल बनाते हैं जो एक मीडियम में ट्रैवल करते हैं।
डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या है? डीमल्टीप्लेक्सिंग मल्टीप्लेक्सिंग का रिवर्स उल्टा है कि इसमें मल्टीप्लेक्सिंग में सभी सिग्नल कंबाइन होते थे, तो यहाँ डीमल्टीप्लेक्सिंग में सिग्नल इंडिविजुअल मीन्स अलग अलग सिग्नल में डिकम्पोज होते हैं, मीन्स सिग्नल्स अलग अलग ट्रैवल करते हैं। सो ये सिग्नल मल्टीप्लेक्स्ड हो जाते हैं एंड दे आर यूज्ड एज अ लो ऑर्डर एड्रेस बस एज वेल एज डेटा बस। सो ये लो ऑर्डर बस सेपरेट होती है ये मल्टीप्लेक्स सिग्नल में से यूजिंग लैच मीन्स सिग्नल डीमल्टीप्लेक्स हो जाते हैं ALE सिग्नल की मदद से, एड्रेस लैच एनेबल से। सो ये पहले पार्ट में क्या होता है कि ये सिग्नल यूज होते हैं एज अ लोअर ऑर्डर एड्रेस एंड बाद में ये यूज होते हैं एज अ डेटा बस। सो एड्रेस एंड डेटा बसेस सिग्नल्स मल्टीप्लेक्स्ड होते हैं क्योंकि चिप में पिन रिड्यूस हो सके, राइट? ये कंबाइन होके बहुत सारी पिन्स कम ही पिन हमको चाहिए इसमें, राइट? बहुत पिन्स एलोकेट करने की जरूरत नहीं है। सो ये मल्टीप्लेक्स्ड बस का मेन एडवांटेज है। So they are used as a lower address bus as well as data bus, and the lower address bus can separate from these signals using LE address latch enable. So now control and status signals. So ये signals use होते हैं ऑपरेशन के नेचर को आइडेंटिफाई करने के लिए। So two control signals which are read and write. So three status signals are S1, S0, input, output, and memory. So to indicate the beginning of the operation, ALE is address latch enable. If ALE sets to 1, then address bus, and if ALE sets to 0, then data bus. So let's see about ALE address latch enable, pin number 30, right? So this is positive going pulse generated every time the 8085 begins an operation, means machine cycle. It indicates that bits on AD0 to AD7 are address bits. This signal is used primarily to latch the low address for multiplexed bus and generate a separate set of address line A7 to A0. So ये ALE है एड्रेस लैच एनेबल। ये क्या है? ये आउटपुट सिग्नल है जो AD0 एंड AD7 सिग्नल कंटेंट्स की सारी इंफॉर्मेशन रखता है, ये सभी पिन्स की AD0 to AD7 की। मीन्स जब ऑपरेशन स्टार्ट होता है तो ये पल्स जनरेट होती है, राइट? सो इट इज अ पॉजिटिव गोइंग पल्स जनरेटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट क्लॉक साइकिल ऑफ द मशीन साइकिल। जब ऑपरेशन स्टार्ट होता है, जब पल्स स्टार्ट होती है तो ये इसको इंडिकेट करती है, राइट? सो जब पल्स हाई होती है उसका मीनिंग है कि AD0 टू AD7 सिग्नल वो कंटेन करती है, उसको पॉइंट करती है। सो ये AD0 टू AD7 सिग्नल कंटेन्स करती है एड्रेस बस को, एंड जब पल्स लो हो जाती है तो ये इंडिकेट करता है डेटा, राइट? सो ALE सिग्नल है, ये यूज होते हैं AD0 टू AD7 है उसको सेपरेट करता है, इसमें A0 टू A7 एंड A0 टू A7 एंड देन D0 टू D7 में सेपरेट करता है। मीन्स ALE क्या करता है? इसको डीमल्टीप्लेक्स करता है। सो ये सेपरेशन करने के लिए एक एक्सटर्नल लैच कनेक्टेड होता है AD0 AD7 लाइंस के साथ, एंड ये लैच कंट्रोल होता है ALE सिग्नल्स। मीन्स लैच क्या है? लैच एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये आउटपुट को इमीडिएटली चेंज करता है जैसे ही उसको इनपुट सप्लाई मिलता है। सो now in control and status signal, other one is read, RD, pin number 32,
right? So this is a read control signal, active low. This is a read control signal, right? एक्टिव लो हमेशा जो इनको ऊपर सप्लाई होता है वोल्टेज का उसको दूर करता है, मीन्स उसको इलिमिनेट करने में हेल्प करता है। सिग्नल को हम जितना कूल करेंगे मीन्स खींचेंगे उतना अच्छा है, राइट? सो ये लो कंडीशन में, ये एक्टिव लो कंडीशन में वायर्ड या फिर कंडीशन का यूज करना अच्छा रहता है। इसमें मीन्स सिंपल लैंग्वेज में बोलता है तो सिग्नल को एक्टिव लो तब कहा जाता है जब ये सिग्नल उसका फंक्शन पे काम कर रहा हो एंड उसका लॉजिक लेवल 0 हो। This signal indicates that the selected input, output or memory device is to be read and data is available on the data bus. So ये पिन इंडिकेट करती है कि जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है वो रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, राइट? सो रीड इज एन एक्टिव लो इनपुट, मीन्स ये जब लो हो जाता है तब क्या होता है, तब माइक्रोप्रोसेसर इनपुट डिवाइस में से या फिर मेमोरी में से डेटा रीड करता है। सो इन सिंपल लैंग्वेज में हम कहे तो डेटा बस या फिर मेमोरी में से डेटा लेके ये क्या करता है, उसको बस में रखता है, राइट? सो ये सिग्नल क्या इंडिकेट करता है कि जो भी मेमोरी डिवाइस और इनपुट आउटपुट पोर्शन जितना सिलेक्टेड है उसमें से क्या कर सकता है, डेटा रीड हो सकता है। Selected input output of memory devices to be read and data is available on the bus. So microprocessor input data collect करता है जो बस में होता है, मीन्स डेटा बस में जो इनपुट एंड मेमोरी डेटा होता है वो क्या करता है, वो डेटा को फैच करता है, राइट? नाउ राइट पिन नंबर 31. So this is a write control signal, active low signal. So this is an active low signal. ये आउटपुट कंट्रोल सिग्नल है, ये कोई मेमोरी लोकेशन पे से या फिर कोई इनपुट आउटपुट लोकेशन पे डेटा राइट करने के लिए यूज होता है, पर्टिकुलर सिलेक्टेड मेमोरी लोकेशन पे, और वो भी डेटा बस के यूज से। सो लो ऑन दिस पिन इंडिकेट्स दैट अ ऑपरेशन परफॉर्म्ड इज अ राइट ऑपरेशन। सो ये रीड पिन से ऑपोजिट है, ये सिग्नल तब लो होता है जब डेटा बस पे है, तब ये राइट होता है मेमोरी लोकेशन या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस में। सो this signal indicates that the selected input output or memory device is to be write and data is available on the data bus. Now input output memory. So pin number 34. So ये this is a status signal used to differentiate input output and memory operation. ये क्या है कि आउटपुट स्टेटस सिग्नल है, ये सिग्नल इंफॉर्मेशन देता है कि मेमोरी या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। मीन्स ये इनपुट आउटपुट डिवाइस या फिर मेमोरी में से होने वाले डिफरेंट ऑपरेशन को अलग करने के लिए यूज होता है। सो व्हेन द सिग्नल इज हाई तो इनपुट आउटपुट पे ऑपरेशन होगा, एंड जब सिग्नल इज लो तब मेमोरी पे ऑपरेशन होगा। सिलेक्टेड एरिया ऑफ जो मेमोरी का सिलेक्टेड एरिया होगा उस पे ऑपरेशन होगा। मीन्स इफ इनपुट आउटपुट और मेमोरी इज इक्वल टू 0, सो माइक्रोप्रोसेसर मेमोरी के रिलेटेड कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, राइट? इनपुट आउटपुट और मेमोरी इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स सिग्नल इज लो, राइट? एंड व्हेन सिग्नल इज हाई मीन्स इनपुट आउटपुट मेमोरी इज इक्वल टू 1, तो माइक्रोप्रोसेसर इनपुट आउटपुट डिवाइस रिलेटेड कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। सो ये सिग्नल रीड एंड राइट सिग्नल के साथ कंबाइन हो जाता है इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करने के लिए। नाउ इन कंट्रोल स्टेटस सिग्नल्स S1 and S0, pin 33 and pin 29. So these are the status signals. These status signals can identify various operations. ये आउटपुट स्टेटस सिग्नल है, ये
जो माइक्रोप्रोसेसर में जो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन देते हैं। जब S0 और S1 कंबाइन होते हैं इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी सिग्नल के साथ, तो मशीन साइकिल्स मीन्स ऑपरेशंस जो 8085 परफॉर्म कर रहा है उसके स्टेटस को देख सकते हैं। लाइक अगर स्टेटस S1 एंड S0 दोनों 0 मीन्स स्टेटस इज 0, then means operation mode is on halt, right? ये इंस्ट्रक्शन CPU, ये halt है HLT, ये जो इंस्ट्रक्शन है वो CPU को तब तक हॉल्ट पे रखता है जब तक कोई नेक्स्ट एक्सटर्नल इंटरप्ट ना आए, राइट? मीन्स जब तक कोई दूसरा इंस्ट्रक्शन ना आए तब तक ये हॉल्ट पे रखता है। When S1 is equal to 0 and S0 is 1, then mode of operation is right. When S1 is 1 and S0 is 0, then mode of operation is read. And when both are 1, then the operation mode is upward fetch in search for the instruction. So this is the table of status of all operations which is performed by the 8085. So input, output, memory, read and write, these are the control signals. So when these all are 0, means the operation mode is on halt, right? When input, output, memory and read is set to 0 but write is 1, then mode of the operation is memory read. When input, output, memory set to 0, this set to 1 and this set to 0, then memory write operation. When this is 0 and these both are set to 1, then operation performed is upward fetch. Now when it is set to 1 and these both are set to 0, then the operation mode is halt. When it is set to 1 and this set to 0 and this set to 1, then mode of operation is input read. When input, output, memory and read both are set to 1, and if this is set to 0, then input write operation. And then if this and this input, output, memory, read and write both are set to 1, then no any operation. Now power supply and frequency signals. So VCC and VSS. So ये पावर सप्लाई सिग्नल है जहाँ से चिप को पावर सप्लाई मिलता है. So VCC connected है plus 5 volt power supply. VCC means voltage common connector. It is higher voltage. ये पावर इनपुट डिवाइस है जहाँ से चिप को पावर मिलता है. जब पॉजिटिव पावर सप्लाई यूज होता है then VSS means voltage source supply यूज होता है, means ground or 0. So VSS in pin 20 for the ground reference. Right. Now power supply and frequency signals. So pin number 1 and pin number 2, X1 and X2. Digital oscillator is connected at these two pins. Digital oscillator एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल बनाता है. So ये X1 and X2 पिन के साथ कनेक्टेड है, right? So frequency describe क्या करती है? The frequency is internally divided by 2. फ्रीक्वेंसी डिस्क्राइब करती है कि जो टाइम दिया गया है उसमें कितने अमाउंट में वेव्स पास हुए हैं. So frequency is the rate at which the current changes its direction per second. This current उसका डायरेक्शन पर सेकंड कितनी बार चेंज करता है उसका रेट. So frequency is internally divided by 2. So therefore, operate a system at 3 megahertz. The crystal should have a frequency of 6 megahertz. Right? So ये X1 and X2 क्लॉक इनपुट सिग्नल्स है, ये कनेक्टेड है क्रिस्टल LC और RC नेटवर्क्स.
RC means resistor and capacitor in series, and LC is an indicator and capacitor. So ये क्रिस्टल LC और RC नेटवर्क से कनेक्टेड है X1 and X2 पिन्स. X1 and X2 पिन इंटरनल क्लॉक जनरेटर सर्किट की फ्रीक्वेंसी मेंटेन करता है. So frequency is divided by 2 and used as a operating frequency. फ्रीक्वेंसी को ऑपरेट करने के लिए यूज होता है. तो ये 6 MHz क्रिस्टल X1 एंड X2 के साथ कनेक्टेड है. ये 2 से डिवाइड हो जाता है. That's why the operating system frequency of 8085 is 3 MHz. Now CLK output is clock output pin number 37. So this signal is used as system clock for other input-output devices for synchronization with microprocessor. ये आउटपुट सिग्नल है एंड एज अ सिस्टम क्लॉक यूज होता है. सो जो इंटरनल ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है ये अवेलेबल होती है क्लॉक आउटपुट पिन पर. सो ये फ्रीक्वेंसी ऑस्किलेटर फ्रीक्वेंसी से हाफ होती है. ऑस्किलेटर मीन्स ये आउटपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से कैरेक्टराइज किया जाता है. ऑस्किलेटर सिग्नल प्रोड्यूस करता है इसका रेडियो फ्रीक्वेंसी. ऑस्किलेटर क्या करता है, वो सिग्नल को प्रोड्यूस करता है. सो इसकी जो रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 100 किलोहर्ट्ज टू 100 गीगाहर्ट्ज तक होती है. सो ये जो पिन है ये यूज करती है सिस्टम के पेरिफेरल्स मीन्स जो कंप्यूटर की इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है वो. सो ये पिन यूज करता है पेरिफेरल्स मीन्स इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एज ए सिस्टम क्लॉक इनपुट उनके ऑपरेशंस के लिए. सो माइक्रोप्रोसेसर एंड ये पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच में सिंक्रोनाइजेशन हो सकता है. नाउ एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स मीन्स इंटरप्ट सिग्नल्स. Interrupts are the signals generated by external devices to request the microprocessor to perform some task. So interrupts external devices के जो signals generate करती है वो है. So ये signals microprocessor को कोई task perform करने के लिए request भेजते हैं. So first is INTR means input signal. This is a interrupt request. The signal is used for the interrupt request. So it is used for a general purpose interrupt. ये एक्टिव हाई सिग्नल है एंड नॉन वेक्टर हमको पता है कि माइक्रोप्रोसेसर को ये जो इंटरप्ट है उसका लोकेशन का पता नहीं होता. सो इट हैज द लोएस्ट प्रायोरिटी. जब डिवाइसेस को सर्विस चाहिए होती है तो डिवाइसेस को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है ये पिन के थ्रू जो वो रिक्वेस्ट होती है राइट. लॉजिक 1 पे सेट करके मीन्स पिन को हाई पे सेट करके. ये सिग्नल सॉफ्टवेयर अलो भी करता है और अलो नहीं भी करता. जब ये इंटरप्ट पिन हाई होती है तब 8085 माइक्रोप्रोसेसर जो करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसको एग्जीक्यूट करता है. सो जब ये INTR पिन है ये हाई पे सेट होती है तब 8085 माइक्रोप्रोसेसर का जो करंट इंस्ट्रक्शन होता है उसको कंप्लीट करता है. जो इंस्ट्रक्शन अभी एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसको देन INTR सिग्नल को पहचानता है एंड देन प्रोग्रेस करता है. नाउ सेकंड इज INTA आउटपुट सिग्नल मींस इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट. ये आउटपुट सिग्नल है. ये इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट माइक्रोप्रोसेसर को इंडिकेट करता है कि माइक्रोप्रोसेसर ने इंटरप्ट रिक्वेस्ट को रिसीव किया है. इंटरप्ट का कोई रिक्वेस्ट है उसको रिसीव किया है तो ये सिग्नल एक्नॉलेज करता है, बताता है. नाउ अदर एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स आर RST 7.5, 6.5 and 5.5. These are input signals. So इसको कहते हैं हम इस सभी सिग्नल को कहते हैं restart interrupts. So these are vector interrupts that transfer the program control to specific memory location.
ये एक्टिव हाई एंड फैक्टर सिग्नल मीन्स माइक्रोप्रोसेसर को ये इंटरप्ट का मेमोरी लोकेशन पता होता है. ये इंस्ट्रक्शन अपने आप से इंसर्ट होने के लिए रिस्टार्ट होते हैं. सो प्रायोरिटीज ऑफ दिस इंस्ट्रक्शंस आर 7.5, 6.5 and 5.5. Means these have a higher priorities than interrupt request. So among these three interrupts, the priority order higher to lower is restart is RST 7.5, RST 6.5 and RST 5.5 respectively. So जब RST 7.5, 6.5 और 5.5 एक्टिव होते हैं तब माइक्रोप्रोसेसर इंटरनली रिस्टार्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली. Now trap. This is also interrupt signal. It's externally initiated signal. So this is the input signal. This is a non-maskable interrupt and has a highest priority. So ये active high level signal है, ये non-maskable है. Also it is a vector and edge trigger. Edge triggering the circuit becomes active at negative or positive edge of the clock signal. मीन्स अगर सर्किट पॉजिटिव एज ट्रिगर है तो ये इनपुट तब होगी जिस टाइम पे क्लॉक सिग्नल लो से हाई पहुंचेगा. सो जब ट्रैप लाइन एक्टिव होती है तब माइक्रोप्रोसेसर इंटरनली रिस्टार्ट होता है ऑटोमेटिकली एट द वेक्टर एड्रेस ऑफ 0024H. सो नाउ होल्ड व्हिच इज द इनपुट सिग्नल. सो this signal indicates the peripheral such as a direct memory access controller is requesting the use of address and databases. This is a DMA request signal, direct memory access signal. It is designed to transfer data at the fastest rate. So ये devices को directly memory में से या memory को data transfer करने को allow करता है. So होल्ड क्या है? होल्ड इज एन एक्टिव हाई इनपुट सिग्नल. ये दूसरे कंट्रोलर यूज करते हैं माइक्रोप्रोसेसर को रिक्वेस्ट करने के लिए. मींस एड्रेस डेटा एंड कंट्रोल सिग्नल्स यूज करने की रिक्वेस्ट करते हैं. एंड HLDA is the output signal. So it holds the acknowledgement. Hold acknowledgement. So hold acknowledge. This signal acknowledges the hold request. So hold and HLDA signals डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के लिए यूज होते हैं. डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर डिवाइसेस से रिक्वेस्ट रिसीव करता है एंड टर्न दिस इश्यूज टू द होल्ड सिग्नल टू द माइक्रोप्रोसेसर. प्रोसेसर सिस्टम बस को रिलीज करता है एंड देन होल्ड सिग्नल को एक्नॉलेज करता है HLDA सिग्नल के साथ. मींस होल्ड एक्नॉलेज सिग्नल के साथ. सो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का ट्रांसफर स्टार्ट हो जाता है. सो ये HLDA सिग्नल पिन नंबर 38 पे जनरेट होता है और ये सिग्नल तब अनेबल होता है जब प्रोसेसर को ये HLDA और होल्ड सिग्नल मिलता है एंड ये होल्ड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल मिलता है तब. एंड ये होल्ड एक्नॉलेजमेंट को रिलीज करता है मींस एक्नॉलेज करता है ये बताने के लिए कि बहुत सारी रिक्वेस्ट होल्ड पे रखी हुई है. देन ऑपरेशन के बाद वो फ्री हो जाएगी ये बताने के लिए कि होल्ड को रिलीज कब करना है. Now ready. This is the input signal. So this signal is used to delay the microprocessor read or write cycles until no responding peripheral is ready to send or accept the data. ये एक्टिव हाई इनपुट कंट्रोल सिग्नल है. सो माइक्रोप्रोसेसर पे ये सिग्नल को यूज करता है. सो इसीलिए यूज इसीलिए करता है कि वो डिटेक्ट कर सके कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस डेटा ट्रांसफर करने के लिए रेडी है कि नहीं. अगर रेडी नहीं है तो प्रोसेसर जब तक सिग्नल नहीं आता, जब तक हाई सिग्नल नहीं आता तब तक वो वेट करेगा. अगर रेडी सिग्नल आता है तो माइक्रोप्रोसेसर वेट स्टेट में चला जाता है. सो ये रेडी पिन प्रोसेसर एंड पेरिफेरल मींस डिवाइस इसके बीच में सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करता है. सो माइक्रोप्रोसेसर का रिस्पांस
फास्टर हो जाता है। तो ये पिन तब अनेबल होती है जब माइक्रोप्रोसेसर एंड पेरिफेरल्स एंड ऑल्सो मेमोरी सब नेक्स्ट ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए रेडी हो। सो जब रेडी पिन डिसेबल हो जाती है देन माइक्रोप्रोसेसर वेट स्टेट में चला जाता है। सो जैसे मैंने बताया कि व्हेन द सिग्नल को इज लो द माइक्रोप्रोसेसर वेट्स फॉर एन integral number of clock cycles until ready signals to is. Now reset in and reset out. So reset in, this is the input signal. So when the signal on this pin goes low, the program counter is set to 0. The buses are tri-stated and microprocessor is reset. This is active low input reset signal. जब reset सेट 0 पे होता है तो प्रोग्राम काउंटर को क्लियर कर देता है। सो सिग्नल रीसेट हो जाने के बाद इंटरनल रजिस्टर का स्टेटस एंड फ्लैग चेंज नहीं हो सकता है। सो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी चेंज हो जाएगा एंड प्रोग्राम काउंटर भी रीसेट हो जाएगा। एक्टिव लो सिग्नल इस पिन पे प्रोग्राम काउंटर को रीसेट कर देता है, राइट। तो एंड वी कैन ऑल्सो से दैट प्रोग्राम काउंटर को रीसेट करने के बाद वो इनिशियल मेमोरी एड्रेस को होल्ड करके रखता है। एंड रीसेट आउटपुट सिग्नल दिस सिग्नल इंडिकेट्स दैट द माइक्रोप्रोसेसर इज begin reset. The signal is also used to reset other devices. ये एक्टिव हाई आउटपुट सिग्नल है, ये यूज होता है इंडिकेट करने के लिए कि माइक्रोप्रोसेसर रीसेट है। ये सिग्नल सिस्टम को रीसेट करने के लिए यूज होता है। सो ये दूसरी डिवाइसेस जो सिस्टम के साथ कनेक्टेड है उसको रीसेट करने के लिए यूज होता है। सो जब प्रोसेसर रीसेट होता है तो जो भी डिवाइसेस प्रोसेसर के साथ कनेक्टेड है वो सभी रीसेट हो जाएगी। नाउ सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। सो 2 pins for serial transmission. One is serial input data SID and SOD serial output data. So serial transmission में डेटा बिट सिंगल लाइन में सेंड होती है, मींस एक बिट एक टाइम पे सेंड होती है। So here SID means serial input data, तो कहाँ पे है ये पिन नंबर 5 पे है। ये पिन के यूज से डेटा प्रोसेसर को डायरेक्टली सीरियल में पहुंचता है। ये पिन का यूज करके डेटा है वो क्या करता है, डायरेक्टली सीरियल फॉर्म में पहुंचता है इनपुट डिवाइसेस के यूज से। सो हियर एसओडी मींस सीरियल आउटपुट डेटा, राइट। सो ये डेटा पिन का पिन नंबर है 4। तो जब डेटा माइक्रोप्रोसेसर में प्रोसेस हो रहा होता है तो ये पिन आउटपुट डिवाइसेस का बिट बाय बिट रिजल्ट रिप्रेजेंट करता है। So this is the pin diagram of 8085. It is total 40 pins. So this is AD0 to AD7 and A8 to 850. These are address bus and data bus signals. 808 A8 815 indicates the address bus lines and AD0 to AD7 pins indicates the multiplexed address and data bus lines. So these are the interrupt signals, external signals. So ये है ट्रैक RST 7.5, 6.5, 5.5, INTR and INTA means interrupt request and interrupt acknowledge, right? These are the restart signals. Now hold A, it's hold data and hold acknowledgement. So these are the direct memory access signals. X1 and X2 are clock signals. VCC and VSS, these are the power supply signals. Clock out, these are the clock signals.
ALE, address latch enable. This is a status and control signal. Also, read and write, input output memory. These are the input output memory. These are also the status and control signals. S1 and S0. S1 and S0. These are the status signals. Now, serial data input and serial data output. Serial input data and serial output data. These are the serial input output signals. This ready is also a status signal. This is reset in and reset out are the reset signals. So we can see here 8085 microprocessor signals. So these are the serial input ports. Externally initiated signals, like interrupt signals, and external signal acknowledgement, reset out and clock out. These are the control and status signals. These are the higher order address bus 8 to 8 to 15, and these are the multiplexed address and data bus 802, AD0 to AD7. And this VCC and VSS are power supply pins, and these are the X1 and X2, which are the clock signals. So this is all about pin diagram of the 8085 microprocessor. Thank you.